Hello student. Now today I am going to teach you about the positive real function. In previous lecture we have seen that how to solve the network problems in Hartwig's criteria, in which we have studied the properties of the uh, networks and basically what are the condition to solve the problems, and step by step we have already seen. Now in the second phase we have studies the positive real functions, in which we have take some properties, and after that we have solved some numerical problems, so that you have more clear about that. And the next one is that the step by step how to solve the network problems. So let's begin for this solving these problems. So the positive real function, what is the positive real function? There is some real values for all the real values of S domain. uh, I have I would like to remember you, if you taken some uh, just a moment please. The fs will be called as a positive real function if fulfill these four important conditions. So these are the four important conditions: one, two, three, four. So these four conditions must be satisfied while we are solving the equation. So while we are solving the equation, just a moment please, I'll show you. So these are the four conditions must be satisfied while we are solving this equation. So there is what is this mean? What is this mean? This PS should be Hartwig's polynomial. Means this is you have to satisfy the condition in previous session we have shown. Then H polynomial must be satisfy the conditions. This is the first condition. Means uh, what we have said, we have written this. If you remember, I have written here fs, this is the function. Fs is equal to, general equation I have written here for your remembering. If you remember, what is p s ps divided by q s, ps divided by qs. This is the general function. You have remembered what is p, what is the s, and how do you define the p and s. So this condition must be satisfied. The first condition, ps should be, this ps should be this Harvard's condition, right? Now next, if we substitute s is equal to j omega, then on separating the real and the imaginary parts, the real parts is the function should be greater than equal to 0, means it should be non-negative. This must be important condition, and we will frequently use this condition in order to find out the whether the function is positive or the function is positive real or not. So how do you find out how do you find out this condition? The second one, what it does mean and how do you interpret these conditions? So these are the function actually we have to use. So these are the condition must be satisfied. And in further example, in further we have taken some example in which we have taken this replace s is equal to j omega, then it will be more clear to all of you. And the interpretation of what it does mean s is equal to j 0 is more clear on while we are solving the equation. Now the third one is on substituting of s is equal to j omega. Fs should possess simple poles, and the residues should be real and positive. See, what is this mean? You have to know about what is the pole, what is the zero. You must remember. So if here I would like to say you, if this
function, if the fs is the function, then the denominator is set the 0, in the denominator is set the 0, and the numerator is set the poles. So you have to remember always which is the called 0 and which is called the 0 and poles. So the poles and 0 must be lies in a, if in the region of a stable condition, a stable area, then the system is stable. If the uh, condition, if the condition means if the function poles and 0 lies on the imaginary axis, then the system is marginally stable. If the poles and 0 lies in the left side on the plane, then the system is the stable. These are the condition. You have to remember these conditions. In control engineering, you have to must be read on this subject in control system. So these are the 3 4 condition must be satisfied while we are using this condition on the while solving this equation. So I would like to tell you, interpret this one. On substitution, j omega should be simple poles, and the residues should be real and positive. So let's come for the next. uh, just a moment. See, on substituting s is equal to 0, f should be simple poles and residues in the form. So what it does means this I have, these are the, if I would like to draw this one, this is omega, this is j omega, this is j omega. So on substituting s is equal to j omega, fs should be positive simple poles, and the residue should be real and positive. Means, see, if on this is the imaginary axis, if the function is lies on this axis, then system is marginally stable. If the this is the right plane, and this is the left plane. Sorry, this is the left plane, right? This is the right plane, this is the left plane. If the poles are 0, if I said this is the pole and this is the 0, lies on left plane, then system is stable. If the poles and 0 right lies on the right hand side plane, then system is unstable. So on substituting, we have another slides while we are solving some problems, and we have seen what it does mean and how do you interpret interpret on this. Yeah. So this I have taken some question, how the positive real function fs, taken some positive real function and realize this equation while we are solving. s is replaced by j omega. So इस तरह का प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड आउट दिस फंक्शन इज़ गिवन देयर. सो आपको ये फंक्शन दिया रहेगा. दिस इज़ द क्वेश्चन and you would like to answer it in terms of positive real function. आपसे ये पूछा जाएगा, फाइंड आउट द रियल पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द पॉजिटिव रियल फंक्शन ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, गिवन क्वेश्चन. सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या करना है? आपने क्या करना है, सबसे पहले रियल फंक्शन के लिए ये जो s है इसको रिप्लेस कर देना है. जहाँ जहाँ s है इसको रिप्लेस करना है j ओमेगा से. तो इस फंक्शन में आप देख सकते हैं जहाँ भी j है, जहाँ भी s है उसको रिप्लेस कर देना है j ओमेगा से. तो j ओमेगा से रिप्लेस करने से रियल फंक्शन को जब हम रिप्लेस करेंगे तो इट वुड बी लाइक दिस j ओमेगा.
this one j omega प्लस 2 प्लस एस जे ओमेगा प्लस 1। इक्वेशन को जब हम यहाँ पे रियल फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, माइनस जे ओमेगा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। क्यों करें, ये क्यों कर रहे हैं? इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए ये जो रियल फंक्शन है उससे हम ऊपर नीचे गुना कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब 1 हो गया। अगर हम इसको करेंगे तो ये अगर कट जाएगा आपस में तो ये 1 होगा, ठीक है। और 1 को अगर इससे गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो जो हमारा सवाल दिया हुआ था, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ उतना ही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन को जो रियल फंक्शन था उसको हम इक्वेट करने के लिए माइनस जे ओमेगा प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू जस्ट माइनस जे ओमेगा प्लस 1 मल्टीप्लाई both in the numerator and denominator, and its value is nothing but equal to 1. So it doesn't matter. Now what we have to do, just multiply this equation, j omega 2 plus 2 into minus j omega 1 plus 1, and it would be like that, j square, j into j square minus, so minus is still here. Now j omega square is omega square plus j omega if you multiply with 1 j omega, and like this 2j omega plus 2. So and this is nothing but the j omega square. Means what is the value of, I would like to say you, what is the value of, if you remember j, what is the value of j square? So the value of j square is nothing but minus 1, राइट। सो जहाँ जहाँ पे जे स्क्वायर है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सी मल्टीप्लाई करना है इंटू, तो ये इंटू करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं। एंड ये तरीका है। So these are the steps you must be remember, and draw the in copy and pen. You have to practice this equation, so you are more convenient in the, while doing the examination. So these are the method, and these are the simple calculation of while we are solving this equation. So after solving this equation, this real function is omega square plus 1 means or omega square and plus this, and since the fs is the value of this fs, so this is nothing but the fs. These are the function of fs, these are the function of fs. Since the function of fs, what does this mean? Since the function of fs means this one is greater than equal to 0, greater than equal to 0, hence this is a positive real function. So the first condition is satisfied. So once, so this is the method, and this is the steps you have to follow while we are solving the positive real function numericals. So it is very easy, but you have to, what do you have to do, this type of question I have posted in the Google Classroom. Go there and download this question and practice in your copy, and send it to me. If there is something some problem, you are free to call to me. I'll get back to you. So these are the some step you have must be understand. See, now let's go for the one more question, then you have must be clear all this things. Yeah, see here I have taken this question, s minus fs is equal to s 8s divided by s plus 1. Again we have to find out in real function, so convert into the real function, and this is the method of finding the real function. So these are the real function, then we have to again minus j omega plus 1. For equating this equation we have to multiply this by minus j omega plus 1,
and solve this equation. So this is the product of this would be j square plus 1, right? And while we are multiply by these two quantities, then it would like this. So again we have to simple formula and find out the solution of the question, right? So this would be like that: minus 8 j square, j plus 8 minus omega square minus j omega divided by omega square plus 1. So this is the function. Now this function is less than equal to 0. Why I am calling this? If 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 omega is equal to, put it, if omega is equal to 1, put it over 1, means 8 minus 1 divided by 1 plus 1 plus 1, that is equal to 7 by 2. 7 by 2. It is okay. If omega is equal to 3, if omega is equal to 3, or if omega is equal to real positive number, then the total value is less than equal to 0. So hence this means the total value is equal to 0, means it is not a real positive real function. It is not a real positive function, right? So these are the method which you have to satisfy this equation, right? Now take another example. See, this is the one question. So I would like to practicing your more and more uh, problem, so that you have to just more convenient while you are doing the examination. So the next question is fs is equal to s square plus 2s plus 20 divided by s plus 2. F is equal to j omega. Put it there equation, the equation, replace this, and it become like that. Simple solving the equation. These are the function in which you have to equate the equation. So by equating the equation, you have to must satisfy this equation, and it would become this. And then the next line, these are the steps. These are the steps of solving the equation. If you want to look at that, so simple problems आपने ये 9वीं-10वीं में किया होगा, और ये सिंपल एक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, और ये गुना करके इसको हम निकालते हैं. इसमें एक ही बात ध्यान देने वाली बात है, वो है जे, और जे स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है वो वैल्यू मैंने बता दिया. जे इज इक्वल टू होता है -1. तो जहाँ पे जे स्क्वायर आएगा वहाँ पे आपने क्या करना है, -1 पुट कर देना है और इसको सॉल्व करना है. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में ये आएगा. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम आगे देखते हैं कि एफ एस इज इक्वल टू जो फंक्शन था, उस फंक्शन को जब हम रियलाइज़ करते हैं तो ये आता है. अब ये वैल्यू देखना है कि ये वैल्यू जो है इसमें पुट करके देखना है कि ये वैल्यू 0 से बड़ा आता है या 0 से कम आता है. इफ़ द वैल्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, then the function must be real and positive. If the function is less than equal to 0, then the function would be not real and positive. So these are the simple two conditions you must be satisfied while we are solving this equation. So these two question you have to find out and see the what are the criteria. So मैंने आपको यहाँ पे 3 अलग अलग कंडीशन बतलाए हैं, 3 अलग अलग न्यूमेरिकल पे, और ये तीनों कंडीशन पे आपको सेटिस्फाई करना है इक्वेशन को कि रियल और पॉजिटिव है कि नहीं. अगर आपका फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया तो आपने ये समझ लेना है कि आपका फंक्शन रियल है. ठीक है, रियल एंड पॉजिटिव है. अगर फंक्शन लेस देन 0 आया फंक्शन की वैल्यू, तो आपने समझना है रियल एंड पॉजिटिव नहीं है. तो इसी हिसाब से आपको मार्क करना है. अपना कमेंट जरूर लिखना है लास्ट में कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है. यही पूछा जाता है एग्ज़ाम में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
realize the network. This is the some different type of question you have to must understand and find out the solution. So what you have to do, you have to do some, I have written this pole of poles and the zero, what is this mean. So यहाँ पे आपने देखना है एक नया टर्म आया है, जब पहले भी बताया था मैंने, ये पोल और ये इसको कहते हैं ज़ीरो और इसको कहते हैं ज़ीरो. This is our pole, this is the pole. So पोल को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये आपका फंक्शन है, ठीक है. इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा कहते हैं. और ये वाला एक्सिस ऊपर नहीं लिख के मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको कहेंगे इमेजिनरी एक्सिस और इसको हम डिफाइन करते हैं जी ओमेगा से, ठीक है. तो पोल और जीरो जो होगा, पहले ही बताया था, इस इमेजिनरी एक्सिस पे अगर लाई करेगा, ये एक मान लीजिए मैंने पोल बना दिया, एक ज़ीरो को जीरो डिफाइन कर दिया, ठीक है. तो अगर यहाँ पे पोल और ज़ीरो लाई करेगा तो हमारा जो फंक्शन होगा, ठीक है, मार्जिन ऑफ स्टेबल होगा. तो ये चीज़ हमको देखना है कि नेटवर्क को जब हम रियलाइज़ करते हैं तो क्या क्या स्टेप होता है और उसको कैसे रियलाइज करेंगे, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे. इसको टेक्निकल टर्म में अगर बोला जाए, टेक्निकली हम इसको कैसे पुट करेंगे नेटवर्क के ऊपर. सो पोल एट इन्फिनिटी फॉर जेड इज इक्वल टू जेड ऑफ दिस इज एल, this is L. See, and these are the given condition. Pole at infinity for Z is equal to for Z L is series. यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है. इसी छोटे से फिगर में बताने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान से देखना. फॉर दिस इज L, ठीक है. मीन्स पोल एट इन्फिनिटी फॉर z इज इक्वल टू एल इन सीरीज. सी, जब भी हम नेटवर्क में करते हैं तो मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने एक रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, और ये हमने एक क्या किया, एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है. ये सीरीज में कनेक्ट है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये टोटल इनका जो कॉम्बिनेशन होगा इसको इम्पीडेंस बोलेंगे. that is called Z. See, so ये कह रहा है at infinity if I denoted the pole is infinity for Z L in series. so L जो है, ये L जो है वो क्या है, सीरीज कनेक्शन है. ये एक नेटवर्क है, इसके साथ कैस्केटेड ऐसे ही नेटवर्क n नंबर ऑफ नेटवर्क लग सकता है इसमें, ठीक है. for C is parallel. so अगर इसके साथ अगर हम समझाता हूँ, अगर कलर अगर मिल गया मुझे दूसरा तो मैं बताता हूँ. चलो इसी से बताता हूँ. अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक और सीरीज में एक नेटवर्क लगा देना है. अब देखो ये कैपेसिटर और ये हो गया जेड, ये कनेक्टेड रहेगा इस तरीके से और इसी तरह आगे कनेक्टेड जाएगा. तो आपने ये वाले, इस वाले को तो हमने क्या किया, Z1 कर दिया. अब अगर ये वाले को हमको लिखना होगा, अब आपको आसानी होगी. अब ये वाले, इस वाले को अगर हमको लिखना होगा तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इस वाले को हम क्या लिखेंगे, इस वाले को हम लिखेंगे Z2. अब आप देखोगे यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर क्या है, दोनों पैरेलल में लगा हुआ. इसीलिए ये कंडीशन दी हुआ फॉर Y एडमिटेंस. इस वाले को क्या कहेंगे, जब भी ये आपको मालूम होगा Z is inversely proportional to the admittance. ये कंडीशन नेटवर्क में पहले मैंने बताया था, ये कंडीशन होता है. तो अब ये जब भी होगा तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल ही रहेगा. ये इस नेटवर्क में और इस दोनों नेटवर्क में क्या है, ये दोनों पैरेलल है. तो ये यहाँ पे समझने की चीज़ है. फॉर Y एडमिटेंस C इज़ पैरेलल. सो आप देख रहे हैं यहाँ पे
पैरेलल में। तो इन सब की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इन सब का वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या तरीका है इसका वैल्यू निकालने का। नेटवर्क में हमने तो बता दिया कि नेटवर्क में दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक एल लगा हुआ है, एक सी लगा हुआ है, बट व्हाट आर द कंडीशन, हाउ डू यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंडक्टर एंड कैपेसिटर। So let's check it out. What are the steps to find out the solution? Means हम, मुझे लगता है आपको ये समझ आ चुका होगा कि इस कैपेसिटर एल और सी का मतलब क्या है। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं और स्टेप देखते हैं कैसे निकाला जाए। वेट फॉर दिया नो। स्टेप वन, आपने क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, एस इज इन्फिनिटी मीन्स इफ the function is putted on the infinity since the numerator is greater than 1 because is the series inductor। मीन्स आपने क्या करना है, अगर फंक्शन आपने फंक्शन है एफ एस, इफ फंक्शन एफ एस है, इफ फंक्शन एफ एस है और ये एस टेंस टू इन्फिनिटी है, ये टेंस टू इन्फिनिटी है, तो क्या होगा, न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन 1 मीन्स जो न्यूमिनेटर होगा फंक्शन का, मतलब यहाँ पे क्या फंक्शन हम लिखते थे, आपको याद होगा, पी एस डिवाइडेड बाई क्यू एस लिखा जाता है, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो पी एस बाई क्यू एस लिखते थे। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर ये टर्म इन्फिनिटी हो गया मीन्स न्यूमिनेटर जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, पी एस की जो वैल्यू होगी, पी एस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पी एस की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि ये जो इंडक्टर है वो सीरीज़ में लगा हुआ है। तो अब इसको हमको वही पी बाई क्यू एस फार्मूला में डिवाइड करना है। तो ये जो था इससे हम इसको भाग देंगे, इसको न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का हम जो फंक्शन लिखते थे पी एस बाई क्यू एस, उसमें हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जो हार्डवेयर, अब हमने क्या करना है, यहाँ चेक करना है एच पॉलिनिमल मतलब हार्डवेयर कंडीशन हमसे सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, यानी एच पॉलिनिमल्स हमको देखना है सेटिस्फाई होगा कि नहीं। तो एच पॉलिनिमल को आपको याद होगा कि इसको करने के लिए हम लोग क्या करते थे, जो फंक्शन था उसको हम लोग डिवाइड करते थे। तो फंक्शन को डिवाइड किया सिंपल यहाँ पे, तो ये क्या आ गया, एक एस, यहाँ पे एस बचा, ठीक है, तो ये एस बच गया यहाँ पे, सिंपल इसको हमने डिवाइड किया और ये इसका शेष बचा और भागफल ये बच गया, मतलब ये कोशेंट बच गया। तो कोशेंट को अभी हमने कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमने क्या करना है, अभी जो भी यहाँ पे बचा उसको यहाँ पे लिख देना है, एंड इट इज़ इंटरप्रेट लाइक Z1, जैसा मैंने पहले फिगर में बताया था। अब क्या करना है, ये Z1 एस, दिस Z1 मीन्स Z1 अभी हम किसके लिए लिए हैं, अभी हमने इंडक्टर के लिए लिया है, इंडक्टर के लिए लिया है, ठीक है। तो इंडक्टर को किससे रिप्लेस करेंगे, एल से करेंगे, एस फंक्शन को लिया इज इक्वल टू एस, तो ये एस बाई एस, एल इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, एल इज इक्वल टू एस बाई एस। तो जब ये एस बाई एस होगा तो ये कट जाएगा, ये कटेगा तो कितना आ गया वैल्यू, एल का वैल्यू 1 हेनरी आ गया। तो एच की एक हमारे सबसे पहले आ गया एच की वैल्यू, तो जो मैंने फिगर बताया था पहले उसमें एल का वैल्यू हमने निकाल लिया एच हेनरी। तो ये एच हेनरी जो होगा ये हम उस नेटवर्क में प्लेस करेंगे। तो जो इंडक्टर की जो वैल्यू रहेगी, जो इंडक्टर का जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी का हमने वहाँ पे क्या लगाना है, इंडक्टर लगाना है, ठीक है। उसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जेड एस इज इक्वल टू 1 प्लस एस स्क्वायर, दिस एस 8 प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई अगेन दिस वन, दिस इज द फाइंड आउट द वैल्यू, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर। सो अब टोटल दोनों सीरीज में लगा हुआ है, जैसे मैंने पहले फिगर में बताया था। तो जेड एस इज इक्वल टू Z1 मीन्स दिस वैल्यू and the Z2 is nothing but these are the value of Z2, these are the value of Z2. So find out the solution. So in next step 3 you have to find out the what is the value of this function.
So simply divide this function. You have to find out this in 9 by 8 plus this one, right? So 9 by s means, now in the case of capacitor, this z2 become like admittance, and admittance value is like this. So while we are solving this, this, then we have to find out the value of the c. So the value of the c, these are the value of the c, these are the value of the c. Since the pole are the positive, so these values are in parallel. So again I have this shown in the previous figure, how the this value is uh, coming, how this value is coming, and how we do interpret this capacitor, why it is connected in the parallel with the circuits. So these are the find out, these are the step to find out the value of the c. Now next slide we have to find out the y4. So we keep changing, keep resolving this quotient value, and find out the same way with 98s divided by s square y, because this is the admittance, and you must be remember that admittance is the reciprocal of the impedance. So here these values are changed, so this value is become like this, these values become like this, so that these values come here and this value is come here. And solve it. After solving, then we have find out the value of z4 z5, and the value of again find out the capacitor and the inductance and the capacitor. And if you place these values in the network, so this is the most important, I would like to say you see, this is the value, this is the in first step we I point out the value of 1h. So this is the value of find the capacitor which is connected in series with this circuit but parallel in this circuit, and the value of 1/8f, and again this is the value of 8h, and this is the value of. So this is the complete realization of the network. You have to find out the step by step. So in this means this slides, solving, you have to understand how we find out the values of the inductor capacitor which is placed in the network, in the ladder network. Because or in series network, okay, if the equation is more than, then you have to find out again the value of this one and this one. So these values are, you have to design the network and place the what are the values of this inductor, and you must be placed over here. So now today I'm going to end my lecture. So this in next lecture we have taken some other example. So I would like to stop my video today.